Good afternoon, everyone. So we are starting the discussion of system today. Can we start from the nervous system? Let's start from the nervous system because we have to start from all the system one by one. तो आज चलिए नर्वस सिस्टम से प्रारंभ करते हैं, ब्रेन से प्रारंभ, right? Because brain is the commander, all other systems are servant. Okay? Brain is the commander. So let's start now. Nervous system or the brain. So look at the here nervous system. What is the meaning of nervous system? Nervous system का अर्थ क्या है? When we're talking about the physiology of the nervous system, it means we are discussing the functions of brain and the functions of spine. तो पहले हम देखेंगे कि nervous system का मतलब क्या है. So we can divide the entire nervous system into part CNS and PNS, central nervous system and the peripheral nervous system. In the nervous system, we can see here, it's a hidden nerve. So the unit of the last unit of nervous system is neuron. हमारे नर्वस सिस्टम की जो आखिरी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूरॉन कहते हैं. हाउ मेनी न्यूरॉन्स इन अवर ब्रेन? आपको क्या लगता है हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन होते होंगे? बताइए तो. हाउ मेनी न्यूरॉन यू आर हैविंग इन योर ब्रेन? बताएं, टेल मी. ओनली मिलियन. you are having very few. केवल मिलियन? oh not मिलियन तो 10 लाख होता है. क्या आपके ब्रेन में सिर्फ 10 लाख है? इतने कम में कैसे काम चलेगा? We are having 100 billion neurons, approximately 100 billion. 100 बिलियन है भैया, कोई ज्यादा नहीं है, 100 बिलियन. So we talk about the nervous system. In the nervous system, we are having 100 billion neuron. Now you can consider the vast aspect of nervous system. But before proceeding to the next discussion of the nervous system, I am very eager to say, आगे बढ़ने के पहले एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. हमारी इंटेस्टाइन में 500 मिलियन न्यूरॉन होते हैं. 500 मिलियन न्यूरॉन in the intestine. कि भैया 500 मिलियन तो केवल हमारी आंतों में ही होते हैं. इसीलिए कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा ब्रेन एंड मन. You are eating the food, you are becoming the same like what you eat. आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं. That's why when any patient coming to us, doctor, can you treat my kidney problem? Can you treat my high blood pressure? Your 50% or sometimes 90% treatment get completed just by nutritional plan in a right way. आपने ढंग से उसे खाने पीने का प्लान दे दिया, आपने उसको न्यूट्रिशन प्लान दे दिया, आप देखेंगे कि आधी बीमारी वहीं खत्म होगी. Are you agree or not? Nutrition is working or not? कि केवल ट्रीटमेंट ही काम करता है. What do you think? अगर हमने एक सही खाना पीना दिया उसको, if we are giving the right diet, we will see the very faster effect in the patient. Any problem, acidity, indigestion, because we are having 500 million neuron in gut, in alimentary canal. अब समझिए कि नर्वस सिस्टम हमारा आंतों में भी होता है.
But right now we will be discussing the main nervous system. So nervous system can be divided in two parts: CNS and PNS. So, what is the main function of our nervous system? The nervous system is controls all the activity of the body. It is controlling the activity of heart. It is controlling the activity of lungs. It is also controlling the activity of our muscles, joints, vision, eyes movement. So nervous system is control of the all the each and every organ of the body. तो हमने देखा कि इसीलिए हम कहते हैं कि मालिक तो एक ही है जो ऊपर बैठा है, बाकी तो सब नौकर चाकर है. When the nervous system is ordering your legs move, then your leg are moving. When the nervous system is ordering something, you are doing that. So we can divide this nervous system in two parts: CNS and PNS, central nervous system and the peripheral nervous system. If we see the name central, means something in the central, like the central government who is sitting in the central, and the peripheral means who is roaming around here and there. सेंट्रल का मतलब है कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठी है, सेंट्रल में बैठी है, और पेरिफेरल का मतलब है जो चारों तरफ घूम रही है, देख रही है भाई ये ठीक है, वो भी ठीक है, इधर भी ठीक है, उधर भी ठीक है. तो दो प्रकार के नर्वस सिस्टम है. एक तो वो केंद्र में बैठा हुआ है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक जो चारों तरफ घूम के देख रहा है भैया हाथों की सब ठीक चल रहा है, पैरों में सब ठीक चल रहा है. So we can divide the nervous system in two parts: CNS, who is the central nervous system, and PNS, who is the peripheral nervous system, who is working here and there. So this is sitting in the center of the human body, and this is around here and there. ये हमारे शरीर के इधर उधर फैला है. So central nervous system is called CNS, and the peripheral nervous system is called PNS, peripheral nervous system. We can see here in this diagram. In this diagram, we can see this is the brain. We can see the brain here. And what is this? This is the spine. ये हमारी spine है. So the brain and spine together are the government who is sitting in the center. इसे कहते हैं the brain and spine together are called CNS, or the central nervous system. So the blue portion in the image is the central nervous system. Okay, जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. बेसिकली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या इंक्लूड करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है. ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरी मतलब दूर की, बाहर की ओर. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करती है, अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करती है. ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ऑर्गन तक पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. So in this way now, we already have understood the CNS, or the central nervous system, right? And we have already understood, okay, brain in the center, spinal cord in the center. These are the CNS. कि ब्रेन और स्पाइन तो केंद्र में बैठे हैं, तो सीएनएस हो गए. What is PNS? Now, the nerve coming from the brain and the nerve coming from the spine and moving around, going around, moving in the each and every part of the human body, that is called peripheral nervous system. अब केंद्र में बैठा है ब्रेन, उससे निकली नर्व और चारों तरफ फैल गई, और केंद्र में है स्पाइनल कॉर्ड, उससे निकली नर्व, वो भी चारों तरफ फैल गई. तो इन सारी नर्व के गुच्छे को, सारी नर्व की सप्लाई को
जो इधर उधर जाके पूरी बॉडी को कवर करती है उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. वी ऑलरेडी नो देयर आर नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन आर cranial nerve, right? Cranial nerve. Then we are having multiple nerve. We are having thoracic nerve, right? We are having lumbar nerve, sacral nerve. Then many nerves are coming. So जो भी चीज ब्रेन से बाहर निकलकर इधर उधर गई उस सारे स्ट्रक्चर को भी टेलिंग PNS. Visibly, so the visible था ना. एक मिनट यहाँ से कर दो. So basically, our nervous system divide into two: the central nervous system as well as the peripheral nervous system. सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में, ठीक है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात करेंगे, when we talk about the central nervous system, the central nervous system is including the brain and the spinal cord. The brain and the spinal cord are the central nervous system. They are the main system of the nervous system. वो ब्रेन में से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है. तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स: ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम. तो अभी यहाँ पर एक बार हम फिर से समझ लेते हैं. हमने वही बात फिर से रिपीट की है. वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. सो द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS, हैविंग टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. हमारे CNS के दो भाग हैं, एक ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी हुई है, जो अपनी जगह बैठी रहेगी, कहीं जाएगी नहीं. जाएंगी कौन? पेरिफेरल नर्व निकल कर जाएंगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सिटिंग इन द सेंटर. नाउ हु विल टेक केयर whole body? That is a peripheral nervous system. So now there are two types of nerve are coming out. दो प्रकार की नर्व हमारे निकलती है. दो प्रकार की नर्व. वो कौन सी नर्व होती है? दो प्रकार की. एक नर्व ऐसी होती है, देखिए, look at the two nerve different. I will show you here. Suppose I want to move my hand. I want to move my hand. Look at my hand. I am moving my hand with the help of my muscle, bone. Am I right or not? I am having too many muscles. They are called skeletal muscle. बहुत सारी मसल हैं जिसे हम skeletal muscle कहते हैं. Skeletal muscle का मतलब है ऐसी मसल जो हमारी हड्डियों को मूव कर रही है. I want to move my lower arm, so my biceps will contract and I will able to move my lower arm, right? So this is called the muscle working under my order. अरे मेरी बात मान रही है मसल, उसे कहेंगे हम सोमेटिक. सोमेटिक मतलब स्केलेटल मसल, कि भाई ये हमारी बात. हमने कहा पैर उठाओ, उठा दिया. हाथ उठाओ, उठा दिया. So there are two types of the peripheral nervous system. One who is working under my order. Okay, now move my neck. So I'm using my muscles power. I'm using my neck. So this is under my order. Second, they are not working in my order. दूसरी मसल ऐसी होती है जो मेरे अपने आप काम कर रही है. Heart is pumping all the time. Oh, heart, don't pump, don't pump, don't pump. No, no, it's still pumping. Or lungs, please don't breathe. It's still breathing. Okay, maybe we can hold the lung, but we cannot hold the heart. Can you hold the heart? जरा बोलिए तो अपने हार्ट की मसल को, रुक जा एक मिनट के लिए, रुक जा भैया, थोड़ा ठहर जा, देखे तो. It will not listen you because the muscle of heart are involuntary. They were not listening you. अपने आप चलती है. Now you are in the bari. आप अपनी गली की, आप है ना, हाथ कुछ गली में से जा रहे थे और पीछे कुत्ता पड़ गया, है ना, क्या होगा? What will happen? Automatically
Definitely you will give the order to your brain, oh, run, 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 run. Your legs are running in your order, but heart is start pumping automatically more blood without telling the heart. So there are too many organs in the body, like heart is pumping. अब अभी आप खाना खा के बैठे हो, खाना खा के बैठे हो ना सब। अभी ऐसे बोलो, ओके इंटेस्टाइन, please push my food from stomach to small intestine. Okay, now is push my food from small intestine to large intestine. You are doing like this? Are you doing like this? कि खाना बहुत खा लिया, बहुत देर होगी, चलो अब खाना स्टमक को छोड़ो, आगे बढ़ो, अब चलो स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो. These all things happening automatically. Am I right or not? But each and everything is happening under your brain. That's why when we are having too much anxiety, क्यों जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर खाना आगे नहीं बढ़ता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. We suffer with the lots of disease. Even heart is not pumping right in the right way, lungs is not breathing in the right way, liver is not helping in the right way. It happens automatically if we are very much stressful. So peripheral nervous system is having two types. Number one, working in our command. Number one, number two, who is not working in our command. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का है. 1 मिनट. तो यहां देख सकते हैं, वी कैन सी हियर, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑटोनॉमिक. अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक. हार्ट इज the work of the heart, work of intestine, work of lungs, work of liver. So we are breathing automatically. And somatic. Somatic मतलब जो हमने किया, हाथ उठाओ, उठा दिया, पैर उठाओ, उठा दिया. Clear or not? So in this way, यहाँ पर sympathetic explain करने क्या है? अब चलिए एक बात और करते हैं. Let's talk about the autonomic. Autonomic का मतलब जो अपने आप चल रहा है. Autonomic has divided in two parts. ऑटोनॉमिक को दो भागों में विभाजित किया गया है. मतलब द थिंग हु इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली डिवाइडेड इन टू टाइप्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. इसका मतलब हम समझा देते हैं. ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक. आप हॉलीडे पर गए, आराम से एक हॉलीडे पर एक गए, तालाब के किनारे नाव में आराम से बैठे हुए हैं, और हाथ में है आपके कुछ खाने का, आराम से शांति से खा रहे हैं. एंजॉय, यू आर एंजॉयिंग योर टाइम. Okay. When you are in the mood of holiday, when you are relaxed, when you are not having no any task, brain is relaxed. That time automatically your parasympathetic system or the relaxation system is working. जब आप रिलैक्स होते हैं ना, तो अपने आप आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. जैसे आप अपने चार दोस्तों के साथ बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना, ताली पे ताली मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अपने आप आपका रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन हो जाएगा. अपने आप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप रिलैक्स. यू विल बी जॉयफुल, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, राइट. दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और दूसरा होता है सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक मींस इमरजेंसी. सडनली व्हाट हैपेंड, you are sitting in the room, suddenly earthquake is coming, earthquake. क्या होगा, एकदम से आप अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, कूद कर भागेंगे जान बचाने के लिए. It happen automatically, automatically. So we can divide the nervous system. The peripheral nervous system is a two part. Number one, somatic, working in our order. Number two, autonomic, which is not working in our order. And the autonomic, which is not working in our order, sometimes it is relaxed, like in the holiday. Sometimes it is very, very like it's making
ourselves alert like in the emergency. तो मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इस बारे में बात की जाएगी. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. 1 मिनट. तो बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नर्वस सिस्टम्स आर, व्हाट इज द आंसर? Write the answer in the chat box. The two type of nervous system, what is the name in the short form? Two type of nervous system, what is the name in the short form? CNS and PNS. Remember this. CNS and PNS. Okay. क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तब हम पता कर, आगे चल के हम समझेंगे कि भाई एमिगडिला क्या होता है, एमिगडिला की बीमारियां क्या होती है. एमिगडिला बाद में आएगा, पहले सीएनएस पीएनएस समझ में आ जाए. What are the disease of hypothalamus? What is the disease of thalamus? What are the disease of midbrain? What is the disease of brain stem? Right? Parkinson connected with which part? Mental retardation which connected with which part? Where the bleeding is happening in the brain for the paralysis patient. एक पैरालिसिस रिपोर्ट लेके आता है ना, ब्लीडिंग हो गई ब्रेन में, कहाँ होती है ब्लीडिंग, वो सब हम देखेंगे. पूरे ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं होती, in the certain particular part there is a bleeding. So we'll discuss everything. The first step we should aware there are two types of the brain, CNS and PNS. Okay, now coming to the CNS. How many types CNS? CNS के कितने प्रकार? How many types CNS? Two type of CNS. What is the name? CNS. Two type CNS. Wonderful. Yes. So brain and spinal cord. हमारी जो पूरी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये क्या है? ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे सांप की कैचुली होती है ना, सांप की कैचुली देखिए, द आउटर कवर ऑफ द स्नेक, our vertebral column, nothing but is the outer cover of this spine. हमारी स्पाइन को बचाए रखने के लिए उसके चारों तरफ हमारी वो रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां होती है ना, वो होती है, क्योंकि अंदर से स्पाइन निकलती है. स्पाइन इज वेरी डेलिकेट पार्ट. नॉट सीन? सांप की कैचुली नहीं देखी आपने? ठीक है, भिजवाता हूँ सूरत में, आपका एड्रेस भेजिए, कोरियर करवाता हूँ, ऐसे सांप और कैचुली दोनों के साथ में. ठीक है हमने. ओके, चलिए. सांप की कैचुली नहीं देखी भाई? नहीं देखी, कोई बात नहीं. सो इन दिस वे नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखा है? अच्छा, आपने हाउ मेनी टाइप पीएनएस कितने प्रकार का होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है? वंडरफुल. ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. एसएनएस. एसएनएस, राइट? सोमैटिक. इसमें हमारी इच्छा के अधीन वाला कौन सा है? हु इज वर्किंग अंडर अवर कंट्रोल? हु, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? Who is working under our order? That is somatic. And what is the name of the nervous system who is not working under our order? जो हमारे आदेशाधीन नहीं है, उसका नाम क्या है? ANR. All of you are so brilliant, so nice, wonderful, excellent. मैं बोलता हूं उसके पहले जवाब आ जाता है. excellent. Now, how many type of autonomic? Autonomic कितने प्रकार का होता है? Autonomic दो प्रकार का होता है. What are the types? वो कौन से प्रकार हैं? Yes. S and P, sympathetic and parasympathetic. चलिए, wonderful.
So now we will be discussing the next step. The central nervous system. The central nervous system is include the brain and our spinal. Now everyone clear with it that our central nervous system CNS is including the brain and the spine. So the covering of the brain and the spine. There are layers around the brain and the spinal cord. जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसके बाहर कवरिंग होता है, जैसे कि हमारी स्किन, इट इज वन टाइप ऑफ अ कवरिंग. इसी तरह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कवरिंग होता है. तो देयर आर टू लेयर, द ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर. ये दोनों नाम है जो कवरिंग है उसके. एक को बोलते हैं ग्रे मैटर, दूसरे को बोलते हैं व्हाइट मैटर. टू लेयर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. जैसे कि ऊपर वाला जो फोटो दिख रहा है आपको, ये है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कट करके लिया है. तो जो बाहर का पोर्शन है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, और जो अंदर का पोर्शन है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर. अभी हमारे ब्रेन में इससे उल्टा होता है. जैसे हमारा ब्रेन का एक पोर्शन कट करके लिया है, इसमें आप सब देख पाते हैं कि जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन है उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं. और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर. चलिए इसको हम एक और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी इजी वे. लेट्स सी हियर नाउ. So when we talk about this is the flower. ये एक फूल है. This is the flower, right? And this is the stem of the flower, right? So our neuron is like this. When we talk about the neuron are like that. In the neuron we are having flower. We will show you shortly. And the neuron is having big tail. एक तो न्यूरॉन का हेड होता है, this we can tell this is the head of the neuron, and this is the tail of the neuron. So head of the neuron is having more gray matter. इसमें gray matter बहुत होता है. Gray, the head of the neuron, ये कहेंगे कि head of the neuron is look like gray in color. जो न्यूरॉन का सिर होता है ना, वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, और जो न्यूरॉन की पूंछ होती है वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है. राइट? इज इट क्लियर? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेन, in the brain there are too many neurons. And when we talk about the tail is going in the spinal cord. Tail is going toward the spinal cord, right? So brain is having more gray matter. Or if we see the brain look like made by the gray matter. And when we see the spinal cord look like made by the white matter. Because of white matter, because of the tail of the neuron. Right? तो ब्रेन में कहते हैं कि भाई जो ब्रेन बाहर से तो ग्रे 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 दिखता है, अंदर है व्हाइट. ओके, अंदर है व्हाइट. लेकिन इफ यू सी द ब्रेन इज लुकिंग लाइक मोर gray matter. Why the gray matter? Because of body of neuron. And when we talk about the spinal cord look like made by white matter, white material. सफेद वाले पदार्थ से बना होता है. Why? Because of the tail of the neuron.
So that's why we are telling, okay, spinal cord is having more white. In the center, we are having little gray, but having more white. I will write once again here. तो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, if we talk about the brain, so the more gray matter outside, and if we talk about the spine, the more white matter outside. Remember this. This is because of the head of the neuron, and this is because of the tail of the neuron. So now let's move here. So now in this slide, you can see we are talking about the brain here. This is the brain, and we are telling spine here. So you can see in the brain, we can see gray matter is outside. Gray. And we can see the white matter is inside. Over the spine, you see outside is the white matter. And inside, very little amount of gray. So पहले तो ये समझ लीजिए कि what is the tail of the neuron और what is the body of the neuron, head of the neuron. ठीक है. So in this picture, I hope everyone able to see the cell body. The one portion is the cell body. So this all the structure is called the body of the neuron, head of the neuron. So it is looking gray. It is located in the gray matter. तो ये जो बॉडी होती है ना हमारे न्यूरॉन की, ये एक न्यूरॉन है, ये समझिए, ये एक न्यूरॉन है. ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन. ठीक है. यहाँ पे हम एक छोटे से न्यूरॉन की बात कर रहे हैं. तो जो न्यूरॉन का बॉडी वाला पोर्शन है, द पोर्शन बॉडी पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, इट इज लोकेटेड इन द ग्रे में. वो कहाँ पे होता है? ग्रे मैटर में होता है. और जो पूंछ वाला पार्ट है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ये पूंछ वाला पार्ट, वो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट मैटर में रहता है. तो सेल ऑफ द न्यूरॉन की जो बॉडी होती है वो ग्रे मैटर में है, और जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वो व्हाइट मैटर में होती है. ठीक है. सो इस तरह से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में न्यूरॉन रहते हैं, जगह बनी. So we can tell in the brain, we are having more and more cell body in the brain, right? But the spinal cord, we are having more and more tail or the axon. And now in this image, we can see this is the image of a neuron. इसमें हमें clearly दिख रहा है कि ये न्यूरॉन की बॉडी है. इसमें एक अंदर न्यूक्लियस है, और ये निकले हुए भाग इसे डेंड्राइट्स कहते हैं. These are the dendrites. This will come, we will discuss these dendrites later on. और ये टेल है, टेल को क्या कहते हैं? एक्सॉन. We are telling this tail is called axon. So in the brain, we are having more and more cell body in the brain, and in the spinal cord, we are having more and more axon. So they are looking. That's why we are telling, because this gray matter and white matter is very important when we are discussing the disease. That time, this knowledge, this information will be very useful. What is the meaning of gray and what is the meaning of white matter here? So now here you can see. Okay. So in the table, you are able to see the brain. So the white matter, it is inner part of the brain, and the gray matter is the outer part. So in the spinal cord, it is opposite. जो हमारा व्हाइट मैटर है वो बाहर की ओर आ जाएगा, और हमारा ग्रे मैटर है वो अंदर चला जाएगा. ब्रेन में न्यूक्लियस जैसे सेल बॉडी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वहां से ही सिग्नल कैरी करना है. तो न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस ब्रेन में ज्यादा है. ठीक है. और जो एक्सॉन है, एक्सॉन का काम क्या है? कि वो इंपल्स पास करता है, वो सिग्नल को पास करता है.
तो उसकी जरूरत स्पाइन में ज्यादा है और हमारे पेरिफेरल नर्व्स में ज्यादा है। तो इसीलिए ब्रेन में व्हाइट मैटर इनर पार्ट में है और ग्रे मैटर आउटर पार्ट में है, क्योंकि ग्रे मैटर की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारी स्पाइन में व्हाइट मैटर की ज्यादा जरूरत है टू पास द सिग्नल। इसको बंद करके सॉल्व करेंगे। अभी ब्रेन कहाँ पे होता है? ब्रेन हमारे स्कल में होता है, सबको पता है। दिस इज द स्कल इनसाइड विच द ब्रेन इज सिचुएटेड। अभी ब्रेन है, उसमें से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में से ही निकलती है, पर स्कल में हमारे जो ये स्कल जो हमारा हार्ड पोर्शन है उसमें एक होल होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर आती है। So remember the foramen magnum is the tunnel, एक टनल की तरह है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आती है। कहां से? ब्रेन से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फोरामेन मैग्नम, right? So we can see here in this image, this is the place called foramen magnum. ये हमारा फोरामेन मैग्नम है, राइट? चलिए, so now we will be discussing the meninges and the covering, but the discussion of the meninges is very long, so we'll continue the discussion tomorrow. हम आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। If you find any difficulty to understand, please put your message in the group and we will try to make this course very easy so everyone can understand. Thank you so much. Let's close the session. See you tomorrow. Bye bye.